Hello everyone. Good morning. Yes, good morning. Good morning. So today's chapter is whatever aldehydes and ketones. So let's start with our session. Am I audible and my screen is visible to you? You can reply me. Yes, am I audible and my screen is visible? Yes, thank you, Surya. Yes, thank you. Okay. Okay, so today we are going to learn about aldehydes and ketones. Okay, for everyone, it is visible, right? Okay, so today we are going to learn about aldehydes and ketones. Okay, aldehydes and ketones. So first of all, tell me the functional group of aldehyde. It is what? Both contains carbonyl group in them. Both contain carbonyl group in them. What is the structure of carbonyl group? Can you tell me the structure? RCHO for carbonyl, that is for aldehyde, and for ketone it is RCOR, right? Like this way we write the aldehyde, and like this way we write the ketone. What is the R? R can be alkyl or aryl group. Okay, alkyl means CH3, methyl group, ethyl group, propyl group, in that way, right? And ketone means, and here R means what? Alkyl group, alkyl, methyl, ethyl, in that way. And aryl means what? Aryl means benzene ring. Okay, benzene ring is present. That is aryl group. Okay, now, okay, let's start with the preparation first. Preparation of aldehydes and ketones. So when we talk about preparation of aldehydes and ketones, we know that the aldehydes and ketones are prepared from primary alcohols, right? From primary alcohol and secondary alcohol by doing oxidation. So when primary alcohol undergoes into oxidation and when secondary alcohol undergoes into oxidation. So what is the oxidizing agent here? K2Cr2O7 plus H2SO4. When primary alcohol undergoes into oxidation, it gives us aldehyde. But when secondary alcohol undergoes into oxidation with the same reagent, we get ketone. This is the first reaction of oxidation. Another reaction, when we talk about another reaction in which we can prepare the aldehydes and ketone, the reaction is dehydrogenation of alcohols. Dehydrogenation of alcohols. So in this reaction, what is happening? Primary alcohol again and secondary alcohol. So when primary alcohol undergoes into dehydrogenation, okay, in presence of copper, same reagent I am going to write here, copper, at around 573 Kelvin. What we get? Here we get aldehyde and here we get ketone. Okay. So third reaction, that is ozonolysis. You must have learned this, right? Ozonolysis in alkene, right? Ozonolysis of alkene. When we do ozonolysis of alkene, that time we get carbonyl compounds. So suppose if we have CH3, CH double bond, CH, CH3. So this is our alkene group. Okay. When it reacts with ozone, okay, it produces what? Carbonyl compound. H2O, in presence of zinc, we get carbonyl compound CH3CHO. That is what? Aldehyde. Here we are getting aldehyde. Okay. Next reaction, if we have different alkene like this way, suppose we have alkene CH3C triple bond CH. Okay, alkene and alkynes. Okay, if we have alkynes, ozonolysis of alkynes, sorry, hydration. Next reaction is hydration. Hydration of alkynes. Okay, here what is happening? The alkyne
undergoes into hydration. What is the meaning of hydration? Addition of water. So here I'm going to use a reagent dilute H2SO4, and here what we are going to get is CH3 CHO. CH3 CHO. Okay. So hydration reaction. Here the main interesting reagent is what? HgSO4. Okay, HgSO4 is the main reagent. Here we will write CH3 CHO. So aldehyde prepare हो रहा है. If you want to prepare what? Acetone, means ketone अगर मुझे prepare करना है, then I will just change the structure. Okay. Okay, something is okay. I should make the structure different here. Okay, 2 कार्बन है ना, 3 कार्बन मैंने लिख दिए इसमें. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा CH, ट्रिपल बॉन्ड CH. Okay, then we will get aldehyde. If we have alkene like this way, alkynes like this way, okay, then we will get ketone. CH3, 3 carbon, CO, CH3. Okay, any doubt? Same reagent. Okay, this is about preparation of aldehydes and ketone. We have seen oxidation, dehydration of alcohol, ozonolysis of alkene, hydration of alkynes. Next, preparation of aldehydes only. For that, we know a very interesting reaction, that is what? Rosenmund reduction. Only for preparation of aldehyde. Only for aldehyde. The name of the reaction is Rosenmund reaction. Okay, Rosenmund reaction. So here, what is this reaction? When acyl chloride, okay, when acyl chloride undergoes into reduction, when acyl chloride undergoes into reduction, that is H2PD, okay, it gives us aldehyde. Okay, it gives us aldehyde, BaSO4, get aldehyde. So this is very, very important reaction. Here we only and only get aldehyde. Ketone is not prepared. When acyl chloride, acyl group means what? COCl. Okay, this group is there, H2PD is there. What you are going to get? You are going to get aldehyde. Okay. So this is about the preparation of what? Aldehydes and ketones. Next reaction is what? Itard reaction. Do you know what is Itard reaction? Yes, Itard reaction. So what is Itard reaction? Itard reaction is the reaction in which there is a benzyl chloride group. Okay, it undergoes into reaction with chromyl chloride. First reagent, and second reagent is what? Water. Okay, or you can write here H3O plus. There is a preparation of chlorine के जगह पे आ जाएगा यहाँ पे what? CHO. Here you get CHO. Sorry, not chlorine. This is CH3. Yeah. Okay. On the position of CH3, we are getting CHO. So aromatic aldehyde we are getting by using a Itard reaction. Okay, by using a Itard reaction. Such a type of same reaction. This is our reactant molecule. Okay, this is our molecule. Okay, this is undergoing into halogenation. Okay, in presence of chlorine. So here, side chain chlorination reaction. Here also we are getting the aldehyde, CHO. Okay, so these are very, very important reactions. Just see, by changing the reagent, you are getting the same product. Left and right hand products are same. The reactant और product same है, लेकिन reagent अगर change किया, ठीक है, reagent कौन से reagent से हमको ये दोनों reagent से same product मिलते हैं, ये आपको ध्यान में रखने के लिए these are the very good examples. Okay, that's why I have written simultaneously side by side. So this is side chain chlorination reaction. Side chain chlorination.
Okay, side chain chlorination. Next, you must have heard this reaction, okay, Gatterman Koch reaction. Okay, the reaction is Gatterman Koch reaction. So here, what is the product? Benzene is our reactant molecule. Okay, please remember in Gatterman Koch reaction, which is the reactant molecule. So most of the time, student forgot the reactant molecule. Okay, because they only know the products and the reagents. So CO is the reagent here in presence of acid and anhydrous AlCl3, or you can say copper chloride. So from benzene, we get benzaldehyde. Okay. We are from benzene, we are getting here. What is this? What is this? This is what? Substitute of benzene. Benzene के ऊपर मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है और तब हमको बेंजाल्डिहाइड मिला. ठीक है, लेकिन यहाँ से हम लोगों को बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड मिलता है. That is the main difference between these reactions, and you should remember this. Okay. Next reaction is what? Preparation of ketones only. So by using this reaction, these two reactions, three reactions, and इसके पहले हम लोगों ने एक reaction देखा ये. These are only for aldehydes. Okay. Now let's talk about only for ketones. Only for ketones. So only for ketones में reaction आते हैं. So our first reaction in that is Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation. You must have heard this reaction in 11th also in hydrocarbon, right? So what is the reaction here? Benzene molecule, that is C6H6, reacts with our acid chloride, whatever will be the acid chloride. There is a formation of a selenium ion in presence of a Lewis acid, that is AlCl3, and there is a formation of ketone like this way, right? Next, another reaction in order to prepare our ketone molecule is from nitriles. Second reaction is from nitriles. So from nitrile means what? What you have to do? So take a reactant molecule C2H5 cyanide, okay, or you can call it as a nitrile. It reacts with Grignard reagent CH3MgBr. Okay, when it reacts with Grignard reagent, okay, there is a formation of a Grignard complex, and then this Grignard complex undergoes into what? Hydration, okay, and then there is a formation of ketone molecule like this way, C2H5CO, okay, and C6H5. Okay, so this is our product. Okay, next from acyl chloride. So these are the reactions in which from only we are getting the ketone molecule. From nitriles, we are getting what? Our ketone molecule. Okay, so this is about the preparation. Now let's talk about the physical properties. So when we talk about the physical properties, we have to consider the physical state, physical properties. So when we talk about physical properties, we need to consider about physical state. Okay, we need to consider about physical state, order, solubility, and boiling point, reactivity, all these things. Okay, so physical state is what? For formaldehyde, it is a gas, and all other aldehydes and ketones up to C11 are or colorless volatile liquid. So first, methanol is what? Gas molecule, and other up to C11 are what? Colorless volatile liquids. So higher members are solid. After that, the members are what? Solid state. Physical state कौन सा होता है उनका? Solid state हो जाता है. When we talk about the order of the aldehydes and ketones, na, lower aldehydes have unpleasant order, but higher aldehydes and ketones have pleasant order. Okay. When we talk about solubility, what will be the solubility of aldehydes and ketones? So lower carbonyl compounds are soluble in what? Water. They are soluble in water. Why they are soluble in water? Because they form due to formation of hydrogen bonding. Due to formation of hydrogen
bonding between solute and the water molecules, but this solubility go on decreases. What happens? This solubility go on decreases with increase in molecular weight. Why that is happening? Due to what? Due to the hydrophobic nature of the bigger alkyl groups in the higher membrane. हाइड्रोफोबिक चेन होता है, अल्केन चेन क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिक चेन होता है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा से ज्यादा बढ़ने के कारण द मॉलिक्यूल solubility decreases as the molecular weight increases, since the hydrophobic tail of the alkyl group becomes more and more. Next, when we talk about the boiling point, so what is the boiling point and melting point for this? So it is directly proportional to 1 upon branching. It is directly proportional to 1 upon branching, and it is directly proportional to molecular weight. We have seen this, right? Boiling point किस पे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा molecular weight उतना ज्यादा boiling point, melting point. But जितनी कम branching उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? boiling point. जितनी ज्यादा branching उतना क्या हो जाता है? boiling point कम हो जाता है. Okay, and when we talk about the boiling points of carbonyl compounds, they are less than the corresponding alcohols or comparable molecular weight. Okay, so when we talk about the boiling point range for other carbon containing compounds, other groups, so amides have larger boiling point than carboxylic acid, which are have more than esters, okay, which are having acyl chlorides, same, okay. These two have around same, then that is greater than ketones and aldehydes. Okay, so the relative boiling points of carbonyl compounds with containing same number of carbon atoms, the sequence or arrangement is like this way. Amides will have greater than carboxylic acid, then ester, which are equal to acyl chloride, then ketones, and then aldehydes. So you can remember this. Okay, this arrangement you can remember. Next, reactivity. So when we talk about reactivity, the reactivity depends upon the nature of alkyl group attached to a given carbonyl compound. Okay, reactivity depends upon the nature of alkyl group attached to the given carbonyl compound. If the alkyl group is smaller, the more reactive will be the compound. Small R group, more reactive. Okay, small R group, more reactive. So reactivity is directly proportional to, we can say that, magnitude of positive charge on carbon atom of carbonyl group. Magnitude of positive charge on the carbon atom of carbonyl group. The carbon atom of carbonyl group. The 40% of the aqueous solution, you are getting this, right? Everyone, 15 students are connected with me. Okay, we are first of all learning about the aldehydes and ketones, short way, and then we will start with the PYQs. Okay, so here reactivities, you are understanding this? Yes, any doubt? So the reactivity is directly proportional to the positive charge present on the given carbonyl compound. Okay, 40% of aqueous solution of HCHO is called formalin. Okay, most of the time the question is asked. So consider this: 40% of aqueous solution of HCHO, aqueous solution of HCHO is known as formalin. It is used as, where does this formalin is used? It is used as a disinfectant and antiseptic. It is used as a disinfectant and antiseptic, and it is also used for preserving certain biological specimen. You must have seen the biological specimen in your biology class, right? So all these are stored in the solution of formalin, and formalin is what? 40% aqueous solution of formaldehyde, right? Next, if we talk about another solution, that is formaldehyde with lactose. Okay, this is what? Formamint. Formamint, which is used for throat infection. This solution, this combination is used for throat infections, okay, in order to cure the throat infection, not do the throat infection. Okay, next, let's talk about the chemical reactions. Okay, you are understanding this? So shall I move on? Okay, I should move further. Okay, very good. So now let's talk about the chemical reaction. So aldehydes, which is more reactive, aldehyde or ketones? So aldehydes are more reactive than ketones.
in nucleophilic addition reaction due to their electric and electronic resonance. So these reactions are following. So you can see here carbonyl compound, cyanide is there. There is a what? Nucleophilic addition reaction. This cyanide has been attached to the carbon. In this way, O minus charge is formed, and that O minus gets stabilized by the hydrogen present in the solution. Here again, you can see SO3, okay, SO3 minus, SO2 minus, Na has been attached, and OH. RMGX, R plus part, MGX is what? This part, so R is going to attach here, nucleophile, R minus, MGX plus, Mg is metal. Aldehydes and ketone, when react with dry HCl, they form acetal. Alkyl, ketones and alcohol, when they react with dry HCl, they form ketone. Okay, please remember this. This is also very, very important. Next reaction you can see here. What is this? NH2Z. So alkyl aryl hydroxide form होगा. क्या form होगा? इस प्रकार का ये reaction. This is very, very important reaction. So this Z group can be alkyl, aryl, NH2, OH, NHC6H5 and NHCO, NH2. This reaction, when it is present, OH, we call it as a hydroxide formation. Yes, hydroxide formation. Next reaction, Clemenson's reduction. You must have heard this reaction. This is very, very, very important. In order for the reduction of carbonyl compound, they directly get converted into alkanes in presence of zinc HDHCl. Very, very important reaction. Most of the time, this reaction has been asked. Directly, the reaction is asked. Sometimes reactant is asked, sometimes product is asked, sometimes reagents are asked. Clemenson's reduction. Or reaction is given and you have asked which type, what is the name of this reaction. Okay, so that's why very, very important reaction. I have just summarized important reaction here. So please pay careful attention. Okay, next reaction is Wolff-Kishner reaction, Wolff-Kishner reduction. Here again, carbonyl group gets converted into the methyl, that is hydrocarbon, but the reagent is different, NH2, NH2, KOH and ethylene glycol, and there is a formation of N2 also. Next, oxidation reaction, you can see here. We are getting acid, we are getting the silver mirror test, we are getting the Fleshing solution test, and we are getting the Bentick solution test. So the reagent here are AgNH3 twice plus OH minus Cu2 plus 5OH minus Rochelle salt and sodium citrate. Okay, CuO and sodium citrate. So aldehyde give positive test with Tollens reagent, Benedict reagent and Fleshing solution, while ketones do not give such a test. So ketone does not give such a test. Okay, Tollens reagent test ये पॉजिटिव आ जाता है, फ्लेशिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, बेनेडिक्ट भी पॉजिटिव आ जाता है, इसके लिए हमारे अल्डिहाइड के लिए, लेकिन कीटोन नहीं दिखाता. तो ट्राई टू रिमेंबर दिस. अल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. 100 स्टार्ट. Okay, every exam the question is asked from aldol condensation, Cannizzaro reaction. Okay, so very, very important reaction. So here what happens is, in aldol condensation, the condensation of aldehydes and ketones which contain at least one alpha hydrogen takes place. Okay, for example, this is our carbon atom. Near to this is the carbon attached. It contains 3 alpha hydrogen, right? This is our carbon atom, carbonyl group. Near to this is alpha carbon which contains 2 alpha hydrogen. So when such structures are there, they will undergo into self-condensation, or they will undergo into condensation with another aldehyde, or ketone will undergo into another ketone molecule to form alpha beta unsaturated carbonyl compound. To form alpha beta unsaturated carbonyl compound. Why I am calling it alpha beta? So alpha, this is beta, carbon in between them, double bond is present. That's why we will call it as alpha beta carbonyl group is present here. So we will call it as a carbonyl compound. The reverse of this reaction is Cannizzaro reaction, in which the key point, that is, if only alpha hydrogen are present, then and then aldol condensation will take place. But if we not have any alpha hydrogen, no alpha hydrogen, even though the reaction will take place, self-oxidation and reduction will take place, and there will be formation of alcohol and salt. Alcohol and salt. Okay, remember this. This is very, very important reaction. Okay, yesterday's NEET exam, the problem has been asked, alcohol और salt हमको मिलेगा, ये मैंने आपको कल explain किया था, वहाँ पे एक problem आया, right? So Cannizzaro reaction is also very, very important. Okay, next. Okay, so Cannizzaro reaction. So that's it about the explanation. Now let's solve some problems. Okay, any doubt in this explanation? Yes? Does anyone have any doubt about this?
ओके ओके, समझ में आ रहा है सबको? अल्डिहाइड and ketones, aldol reaction and aldol condensation and Cannizzaro reaction. Okay, next. So our first problem is what? Reaction by which benzaldehyde cannot be prepared. So I have summarized certain reactions A, B, C, D, and I am asking you that which reaction benzaldehyde cannot be prepared. So the first reaction is what? Yes, the name of the reaction. Can you tell me? The first reaction is CH3 का conversion, CrO2, Cl2 and CS2 followed by H3O plus. What is this reaction in presence of CrO2, Cl2? This reaction name is, very good Ayushi. The name is what? Itard reaction. And in Itard reaction, what will form? I have told you that there will be formation of benzaldehyde, right? So benzaldehyde to यहाँ पे prepare होगा. Should I write the reaction also? Okay, for other student, I will write, okay? So, first reaction is what? When our reagent is this much. This is our reactant molecule. On the arrow, what is present? CrO2Cl2. Okay, CrO2Cl2. And in presence of CS2, it will give us the compound like this way. Okay, वहां पे मैंने आपको मैकेनिज्म दिखाया नहीं था ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CH3 2CrO2 Cl2. Okay, so we get brown PPT of this. On that, when we add H2O, we get simply benzaldehyde, CHO. Okay, so this reaction is known as Itard reaction. So the first is giving us the benzaldehyde. Second reaction देखो क्या है? बेंजिल क्लोराइड है, उसका रिएक्शन H2 से किया इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4. What is the name of this reaction now? ये रिएक्शन भी हम लोगों ने देखा अभी. Yes, this reaction is what? Rosenmund reaction. Rosenmund or Rosenmund, whatever you are willing to call it. So in that, does we get the benzaldehyde? Yeah, Rosenmund, from chloride we get aldehyde. So that is not good. Means that is not our answer. Itard में क्या हो रहा है? इससे हमको benzaldehyde मिल रहा है. यहाँ पे benzene से benzaldehyde मिल रहा है. Third option is what? Fourth option is what? This one, right? What we are getting? Third option is what? I will show you the problem again. Okay, sorry. Third option is what? Benzene reacts with CO plus HCl in presence of anhydrous AlCl3, right? So benzene plus CO, HCl in presence of anhydrous AlCl3. This is Gattermann-Koch reaction. Gattermann-Koch reaction. So that's why these three reactions are what? Itard reaction, Rosenmund reaction, and in everyone, what is happening? Benzaldehyde is forming Gattermann-Koch reaction. The last reaction in which acid reacts with zinc Hg concentrated HCl, there is a formation of COCl and H2O has been removed. So from that, the reactant given in option D, benzaldehyde, is not going to form. The reactant given in the option D will not give us the benzaldehyde as our product. So everyone, समझ में आया क्यों मैंने रिएक्शन पहले एक्सप्लेन किया आपको? क्योंकि आपको थोड़ा अंदाजा आ गया फिर. ठीक है, इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो नीट में आया है ये क्वेश्चन. ओके, सो दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नॉट skip them. Okay, you should not skip them. Yes, so here I have written everything for you. Itard reaction, Rosenmund reaction, Gattermann-Koch reaction, but in this one we are not getting benzaldehyde, but we are getting acid chloride. Okay, benzyl chloride we are getting. So that's why we are not getting benzaldehyde, and that is what our correct option. That is option. Next problem, the product formed by the reaction of an aldehyde. Are you getting this? Okay. Okay, so next question मैंने लिया यहाँ पे. ठीक है, the product formed by the reaction of an aldehyde with the primary amine is. What will be the product when the reaction of aldehyde with primary amine takes place? So what will be the reaction? Product form. Yes, can anyone tell me?
एल्डिहाइड को ड्रॉ करूं, हम कॉमन एल्डिहाइड ले लेंगे. इन जनरल RCHO when reacts with amine RNH2. Okay, this is primary amine when reacts with benzaldehyde. What will happen? These are having the lone pair of electron. They will attack here. Nucleophilic addition reaction will take place, right? RCO. Okay, यहाँ पे है H, यहाँ पे लग गया हमारा नाइट्रोजन, उसके पास है हाइड्रोजन. ठीक है, यहाँ पे है R और यहाँ पे है हमारा हाइड्रोजन. यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज. What will happen? Like this way, the reaction will take place. Okay, RC, यहाँ पे OH, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड. ठीक है ना? ओके, NH, मैं इसको लिखूंगी R. Okay, before forming the double bond, I will just write a single bond. Okay, wait a minute. So यहाँ पे क्या हो गया कि इसके नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया उस पे. तो यहाँ क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, OH NH R. ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे H+ का एडिशन होगा और ये जो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, वो यहाँ पे आएंगे और H2OH ये निकल जाएगा. तो मैं क्या करूंगी, H+ दूंगी. तो ये OH जो है इसको हमको अच्छा लिविंग ग्रुप करना है, तो ये होता है OH2+. Okay, mechanism in here nitrogen R, H and H. So the lone pair of electron now shift here and H2O will get removed. So here I will write our compound like this way. I will get R, C double bond, N, R, H and H. Okay, but now even though there are 1, 2, 3, 4 bonds, so here there will be the positive charge. So now what will happen, this hydrogen will leave and there will be formation of R, C, H double bond N, R. So what is this? Is this ketone? No, it is not ketone. Is this carboxylic acid? No, it is not carboxylic acid. Is this aromatic acid? No, it is not aromatic acid. So what is the remaining? Yes, Ayush, very good. So it is what? Schiff's base. Okay, तो आपको ध्यान में रखना है, this is the structure of the base. Okay, everyone getting this? Simple reaction है, आपने ये पढ़ा होगा. ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. हाँ, next reaction, next problem. Okay, an organic compound X having molecular formula C5H10O yields phenylhydrazone and gives negative response to the iodoform test and Tollens test. Okay, it produces N-pentane on reduction. X would be, what is that X molecule that we have to determine? So here what is given, since this X compound yields phenylhydrazone and gives negative response to the iodoform test and Tollens test, it must contain what? Carbonyl group. Okay, it must contain carbonyl group, but is neither a methyl ketone or nor an aldehyde. Okay, यहाँ पे ना मिथिल कीटोन है उसमें. ठीक है, एक कंपाउंड मिथिल कीटोन नहीं है, एक जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा R ग्रुप वो मिथिल नहीं है, और यहाँ पे अल्डिहाइड भी नहीं है, क्योंकि अल्डिहाइड क्या देगा, टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा. ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट जो देते हैं वो कौन से होते हैं, मिथिल कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, लेकिन वो भी निगेटिव है, इसलिए वो मिथिल भी नहीं होगा और अल्डिहाइड भी नहीं होगा. ओके, द कंपाउंड विल नॉट कंटेन सच मॉलिक्यूल्स. और यहाँ पे हम लोगों को दिया है C5H10O. तो लेट्स ट्राई टू राइट डाउन कार्बन 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 एंड कार्बन. सो यहाँ पे अगर मैंने डबल बॉन्ड O लिखा तो ये मिथिल कीटोन हो जाएगा, बट दैट इज नॉट अवर आंसर ना, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है. तो यहाँ पे हमारा कार्बोनिल कंपाउंड आएगा कहाँ पे, सेंटर में, 5th कार्बन. इस तरह से अभी अरेंज कर लो हाइड्रोजन्स को, H3, H2, H2 and H3. So now all the hydrogens are balanced and the formula for this molecule is C5H10O. Right? So what is this molecule? What is the name of this molecule? 1, 2, 3, 4, 5. So this is what? 3-pentanone.
You can go this with the option also. You can solve this question by using options also. पेंटेनल दिया है, अल्डिहाइड नहीं होगा क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा वो, ठीक है, निगेटिव नहीं देगा ना. अगर अल्डिहाइड होगा तो वो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा. यहाँ पे 2 पेंटेनॉन दिया है, मतलब मिथिल कीटोन आ गया, तो मिथिल कीटोन भी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है, निगेटिव है. सो दैट इज ऑल्सो नॉट. अल्कोहल, एन अमील अल्कोहल, ये भी नहीं हो सकता. ठीक है. नेक्स्ट उन्होंने हमको एक दिया है, देखो, इट प्रोड्यूसेस एन पेंटेनॉन रिडक्शन. अभी इसका मैंने अगर क्लेमेंसेस रिडक्शन किया या फिर वुल्फ-क्लिश्नर रिडक्शन किया तो इससे मुझे क्या मिलेगा, एन पेंटेन मिलेगा. ये अल्कोहल से हमको एन पेंटेन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना. इसीलिए मैंने यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है. ओके, एनी डाउट? शुड आई मूव फर्दर? तो मैंने आंसर पे लिखा हुआ है. एनी डाउट टू एनीवन? Okay, so shall I move on? Next question. Okay, so next, let's talk about next question then. Of the following, which is the product formed when cyclohexanone undergoes aldol condensation? See, aldol condensation, I have told you. What is aldol condensation? When aldehydes and ketones containing alpha hydrogen atoms undergoes aldol condensation in presence of dilute alkali. In presence of dilute alkali as catalyst. Here, what is the catalyst? Dilute alkali is our catalyst. And it gives what? Alpha, beta, unsaturated carbonyl compounds. See, we have talked about this just 10 minutes before. Okay, with the elimination of H2. यहाँ पे H2 निकल जाता है. Elimination of H2. So now क्या है हमारा प्रोडक्ट फॉर्म इन साइक्लोहेक्सिनोन. साइक्लोहेक्सिनोन का स्ट्रक्चर निकालो चलो. व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सिनोन? यस, किसी को आ रहा है इसका आंसर? एबीसीडी, एबीसीडी. कैन एनीवन टेल मी द आंसर? यस, साइक्लोहेक्सिनोन का स्ट्रक्चर निकालो चलो. साइक्लोहेक्सिनोन, दिस इज अवर साइक्लोहेक्सिनोन. ओके, this molecule of cyclohexanone reacts with the undergoes into condensation, self condensation होता है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं क्या कर सकती हूँ, इनोलेट आयन फॉर्म कर दूँ. ठीक है. OH माइनस इज अवर कैटलिस्ट. व्हाट विल हैपन, इट विल, ओके, ये क्या करेगा, या व्हाट विल बी द आंसर? बी, मे बी बी मैम. ओके, लेट्स सी. हाँ, लेट्स चेक गणेश. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा. ठीक है, ये इस तरह से इनोलेट आयन फॉर्म होगा. आई विल राइट इट हियर. ओके, O माइनस and here double bond will be there. Okay, this inolate ion now it is going to attack on the next cyclohexanone molecule present, self condensation. So here the reaction takes place like this way. Okay, bond की मूवमेंट इस तरह से होगी. और फिर यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, देखो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. ये हमारा है साइक्लोहेक्सेनॉन मॉलिक्यूल. यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड. इसका बॉन्ड फॉर्म हो गया यहाँ पे कार्बन पे, यहाँ पे है ऑक्सीजन, उस पे है माइनस चार्ज, लाइक दिस वे. ठीक है, एनी डाउट इन दैट? ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, H2O डालेंगे. ओके, सेल्फ कंडेंसेशन हो रहा है और यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल लाइक दिस वे. व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट इट लाइक दिस वे. जैसे प्रोडक्ट दिया है ना उस तरह से मैं लिख लेती हूँ, मतलब समझने के लिए आसान हो जाएगा. और यहाँ पे ये है इस तरह से. ठीक है, ऑक्सीजन, ये हमारा डबल बॉन्ड हो. ओके, एनी डाउट? यहाँ पे मैंने OH लिख लिया, O माइनस को मैंने OH कर दिया. अभी क्या होगा ना, यहाँ से अल्फा बीटा अनसैचुरेशन फॉर्म होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, ये दोनों चले जाएंगे और यहाँ पे फॉर्म होगा क्या, डबल बॉन्ड. तो आई विल राइट, ओके, आई विल राइट लाइक दिस वे. डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड. ओके, सो विच इज दिस प्रोडक्ट जिसमें डबल बॉन्ड है और कार्बोनिल ग्रुप है. यहाँ पे OH है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. यहाँ पे
तो और ये भी है, नहीं चलेगा ये भी, यहाँ पे ये बराबर है, तो अवर ऑप्शन विल बी बी। गणेश, वेरी गुड, यू हैव आंसर्ड करेक्टली, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड गणेश। Next question, predict the product in the given reaction. So now this reaction, yeah, aldehyde is there, chlorine is just a substituent, don't focus on that. 50% KOH जब भी हमको अल्कली दिया हुआ होगा, ओके, डाइल्यूट अल्कली दिया हुआ होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, दैट विल बी अवर अल्डोल कंडेंसेशन। बट यहाँ पे 50% दिया हुआ है, 50% मीन्स व्हाट, दिस इज अ कैनिजेरोज रिएक्शन। KOH का प्रमाण जो है, concentration is more like 50% KOH is present. So this is Cannizzoro's reaction. I have told you what does form in the Cannizzoro's reaction. Let's go to the Cannizzoro's reaction. Okay, क्या फॉर्म होता है Cannizzoro's reaction में? अल्कोहल फॉर्म होगा, और वो जो हमारा होगा कंपाउंड, उसका क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे HCHO था, HCHO एक कार्बन था ना, तो एक ही कार्बन का अल्कोहल फॉर्म हुआ और एक ही कार्बन का सॉल्ट फॉर्म हुआ। यहाँ पे क्या है, देखो C6H5 था, तो उसका C6H5 और ये C मतलब 7 कार्बन थे, तो उसका अल्कोहल फॉर्म हुआ 7 का, और जो दूसरा कंपाउंड था उसका क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट फॉर्म हुआ। तो मतलब एक का अल्कोहल फॉर्म होता है और एक का क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा है ये मॉलिक्यूल, इसका सेल्फ कंडेंसेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ 50% KOH। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहलिक KOH नहीं दिया हुआ है गणेश, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है 50% KOH। okay, so that's why in presence of 50% KOH and carbonyl group is there, I'm telling you that the reaction which will take place is what, Cannizzoro's reaction, in which alcohol is formed and salt is formed. okay, so यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल और सॉल्ट फॉर्म होगा, तो क्या होगा हमारा आंसर, अल्कोहल और सॉल्ट का ABC, 3 ही ऑप्शन है क्या, फोर्थ ऑप्शन कहाँ गया। okay, so mistake has been happen here, I think. Okay, so what will be our correct answer here? इन ऑप्शन में से कौन सा होगा, CH2OH, CH2CO minus, CH2OH, OH, ये OH OH तो नहीं होगा, सॉल्ट फॉर्म होना चाहिए ना, तो यहाँ पे K प्लस और CO माइनस, K प्लस और CO माइनस। यस, सो यार 1 कार्बन इज देयर, तो उसका एक अल्कोहल फॉर्म होगा, ये बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 दे दिए, तो कहाँ से आएगा ना एक्स्ट्रा कार्बन, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और ये हमारा आंसर है। सो अवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। Okay, in NCERT, alcoholic KOH is present. Okay, I will check that. Okay, Ganesh, and I will tell you tomorrow. Okay, okay, Ganesh, I will check that. Huh? Any further doubt in NCERT? Okay, okay, Ganesh, very good. Next, consider the reaction here. Okay, next problem में क्या दिया हुआ है हमको? Consider the reaction here. XCU giving A, it is giving us silver mirror is observed. It is giving Z, so number of reactions are present. We need to identify here A, X, Y, and Z. So I have directly shown you the solution here. So let's talk about this solution. Okay, मैंने solution यहाँ पे लिख दिया है, हमको ये solution discuss करना है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, identify A, X, Y, and Z. तो सिल्वर मिरर ऑब्जर्व हो रहा है, तो किसके लिए हमको सिल्वर मिरर मिलता है, सो अल्डिहाइड्स गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, सो दैट्स व्हाई X मे बी अल्कोहल व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय Cu टू गिव्स अल्डिहाइड। तो हमारा एक X क्या हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, जिसके ऑक्सीडेशन के कारण, Cu के साथ ऑक्सीडेशन के कारण हमको क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। देयरफॉर A इज एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल, इट इज आल्सो नोन एज एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल। तो यहाँ पे हमारा X आ गया अल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है ना, और वहां पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, नेक्स्ट Cu के साथ रिएक्शन होने के बाद मुझे मिल रहा है यहाँ पे अल्डिहाइड। ठीक है, ये अल्डिहाइड का जब AgNH3 2+ के साथ टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन होता है, तब मुझे क्या मिल रहा है, सिल्वर मिरर इज ऑब्जर्व। तो ये मुझे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या बोला है हमको, वो A से क्या मिल रहा है, हमें Z मिल रहा है। तो A से Z कब मिलता है, जब ये रिएजेंट प्रेजेंट है, NH2 NHCO NH2। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल
लेट्स सी इथेनॉल है और एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, ये बराबर है, बाद में क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल है, ठीक है, एक्स विल बी इथेनॉल, या बराबर है, ये भी ये बराबर है, ये नहीं बराबर, इथेनॉल है और इथेनॉल है, बाकी कहाँ पे दिया है, यहाँ पे इथेनॉल है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, मिथॉक्सीमिथेन, मिथॉक्सीमिथेन, एक्स वुड बी एसिटाल्डिहाइड, नो, ए विल बी एसिटाल्डिहाइड गणेश, सी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, एक्स का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा कॉपर के साथ, एक्स का ऑक्सीडेशन होने के बाद हमको ए मिलेगा, और वो ए क्या होगा, वो होगा अल्डिहाइड, क्योंकि अल्डिहाइड क्या देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव देता है, ठीक है, तो हमारा एक्स क्या होगा, अल्कोहल, ओके, और हमारा ए होगा अल्डिहाइड, एनी डाउट, यस, सी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, एक्स एक्स है ना ये, इसका ऑक्सीडेशन होगा और फिर हमको ए मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई ए विल बी अल्डिहाइड, ओके, और अल्डिहाइड को मैंने क्या बोला, इथेनॉल भी कहाँ है, तो यहाँ पे हमको पहले ए बोला है, इसलिए मैं ऑप्शन से अगर देखूं तो हमारा आंसर तो आ रहा है सी, क्योंकि एक्स अल्कोहल दिया हुआ है, यहाँ पे अल्कोहल है लेकिन ये अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है, एनी डाउट, यस, एनी डाउट, यस, समझ में आया, अल्कोहल और अल्डिहाइड मैंने किसको बोला है, एक्स विल बी अल्कोहल एंड ए विल बी अल्डिहाइड। नेक्स्ट इसका रिएक्शन हो रहा है ये ऑक्साइन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, सिंपल रिएक्शन है, मैंने आपको बताया है, ये सीओ जो है ये क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इमाइन, इमाइन फॉर्मेशन, सो दैट इज नोन एज सेमी कार्बाजोन, ओके, दैट इज सेमी कार्बाजोन, सो जेड क्या हो गया, सेमी कार्बाजोन हो गया, तो देखो यहाँ पे जेड सेमी कार्बाजोन, ये भी बराबर है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है OH निकालो और हिट करो, ठीक है, सो अल्डिहाइड से OH निकाला और हिट किया, ठीक है, तो OH और हिट किया मतलब क्या हो गया, ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया, और अल्डोल कंडेंसेशन में हमको क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, राइट, सो नेम ऑफ दिस इज व्हाट, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 in and 1 al, okay, aldehyde, so our correct answer will be C option, okay, our correct answer will be option number C. Any doubt about this? Yes, okay, now let's talk about the next problem. Which of the following reactions will not result in the formation of carbon-carbon bond? Yes, these are the reaction, Riemann-Timmon reaction, Cannizzaro reaction, Wurtz reaction and Friedel-Crafts acylation. Not result, okay, नहीं देगा हमको, कौन नहीं देगा, yes, Riemann-Timmon reaction, you know the Riemann-Timmon reaction, alcohol reacts with chloroform to give OH and CHO, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, सो दैट इज नॉट अवर करेक्ट आंसर। कैनिज़रोस रिएक्शन, कैनिज़रोस रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया कि ये दो मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं और हमको क्या मिलता है, फेनॉल टू बेंजाल्डिहाइड, गणेश विच रिएक्शन यू आर टॉकिंग अबाउट, फेनॉल टू बेंजाल्डिहाइड, see which of the following reactions will not result into the formation of carbon carbon bond, okay, so our answer will be Cannizzaro reaction, because इसमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दो अलग अलग मॉलिक्यूल हमको मिल रहे हैं, so no new carbon carbon bond is formed in this reaction, that's why our answer will be Cannizzaro reaction. Let's see the Wurtz reaction here, yeah, Riemann-Timmon reaction, very good Ganesh, yeah, from phenol we get benzaldehyde, very good,
अल्कोहल एज वेल एज बेंजल्डेट। वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है हमारा? वर्ड्स रिएक्शन में अल्किल हैलाइड रिएक्ट होते हैं सोडियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ डाईथर वी गेट न्यू अल्किल अल्किल ग्रुप। यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में देखा है रिएक्शन। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन में भी ये जो नया ये कार्बन आ रहा है ये इस कौन से भी बेंजिल के कार्बन से रिएक्ट होता है और हमको क्या मिलता है? न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है। सो ओनली कैनिजोरस रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉट फॉर्म। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट, predict the correct intermediate and product in the following reaction. So हमको अल्काइन दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है और HgSO4 दिया हुआ है. So this reaction we have seen. ये रिएक्शन आया है नीट में. A, B प्रोडक्ट निकालना है, इंटरमीडिएट निकालना है और उसके बाद हमको प्रोडक्ट भी निकालना है. So what will be the correct answer here? So I will write the structure. Okay, first of all CH3. C, I will give the time. जब तक मैं लिखती हूँ आप लोग सोचो और मुझे आंसर बताओ. H2O, Hg, सॉरी H2O, HgSO4 and H2SO4 में नीचे लिखती हूँ. ठीक है, H2SO4. So here what will be the formation? Yeah, OH will attack on this carbon carbon triple bond and there will be formation of OH double bond CH2. So what is the name of this? This is enol. इनॉल कहाँ कहाँ दिख रहा है हमको? बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में, राइट? सॉरी, बी और डी में हमको दिख रहा है इनॉल. ठीक है, दिस इज अवर इंटरमीडिएट. इट अंडरगोज इनटू टॉटोमेरिज्म. दिस अंडरगोज इनटू टॉटोमेरिज्म. तो हमको क्या मिलेगा? H3C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन मिल गया, राइट? तो बी में कीटोन मिल रहा है, नहीं SO4 ऐड हो रहा है. ये तो नहीं ना रिएक्शन हो सकता है, SO4 क्यों ऐड होगा वहां पे? HgSO4 का सल्फर नहीं पार्टिसिपेट करता है यहाँ पे. We are getting this reaction, this product. So intermediate will be enol and the final product will be whatever acetone. Any doubt? Yes, next reaction, next problem. Okay. Clemenson's reduction of a ketone is carried out in the presence of which of the following? So Clemenson's reduction का directly हमको reagent पूछ लिया है. क्या है आंसर? ABCD. Very simple answer. You can tell me that. Clemenson's reduction. Yes, I'm going to wait for this. Okay. ABCD. What will be the answer? Okay, Ganesh. A. Okay. More replies? A. Okay. Let's see. LiLH4, H2PD as catalyst, glycol with KOH. What will be the answer? Okay, A. Okay, so here Clemenson's reduction, as we have talked, carbonyl compound gets converted into hydrocarbon in presence of zinc HgHCl. Right? See this reaction I have shown here. Zinc HgHCl के साथ reaction होके ध्रुवी रघु, very good, very good, very good. Clemenson's reduction remember करना है, ध्यान में रखना है. नींद में से भी उठा के पूछा तो आपको आना चाहिए. Next reaction, the correct structure of product A form in this reaction is. So यहाँ पे हमको दिया हुआ है बेंजोफेनॉल. ओके, यहाँ पे हमको दिया हुआ है बेंजोफेनॉल. ओके, उसका रिएक्शन हो रहा है किससे? H2 गैस से हो रहा है. रिडक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम. व्हाट विल हैपन? ये कार्बोनिल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा या डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा? दैट इज द क्वेश्चन. ओके, सो इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट सिलेक्टिव रिडक्शन टेक्स प्लेस. पैलेडियम कैटलिस्ट के जब होता है, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे पैलेडियम कैटलिस्ट दिया हुआ है. पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, PD इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन. रिडक्शन प्रोसेस. This reaction is reduction reaction. So whether carbonyl compound will undergo into reduction to form OH and the double bond will remain as it is, or double bond will get reduced, or this is not the correct answer. और रिडक्शन होगा ना, डबल बॉन्ड क्यों शिफ्ट होगा? रिडक्शन होने वाला है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, ये भी नहीं होगा. तो ए और बी में से कोई तो भी अपना आंसर है. तो पैलेडियम एंड कार्बन क्या करता है? इट रिड्यूसेस अल्कीन ओवर कार्बोनिल. इट रिड्यूसेस अल्कीन डबल बॉन्ड ओवर कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कार्बन. ओके, तो हमारा कार्बोनिल कार्बन इंटैक्ट होगा, डबल बॉन्ड हमारा सिर्फ रिड्यूस्ड होगा. सो दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी आंसर ऑप्शन बी. ओके, एनी डाउट? प्लीज रिमेंबर, ओके, दिस रिएजेंट, इट्स reactivity, specific reactivity, selective reactivity, or selectivity you can call it as selectivity. Next question.
The correct order of stability of the following tautomeric compound is. Yes. Last question of today's session. Tell me the answer. टॉटोमेरिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए. Yeah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Stability order of tautomeric compounds is. Stable. Why it will be stable? Due to the presence of hydrogen bonding. Okay, due to the presence of intermolecular hydrogen bonding. So what do you think? Which will have the intermolecular hydrogen bonding? 1, 2, 3, 4. Which will have good intermolecular hydrogen bonding? Yes, this molecule or this molecule, which will have good intermolecular hydrogen bonding. Yes. So here the correct answer will be what? 3/2/1. So why that is happening? Because acetylacetone, this molecule acetylacetone is present as a liquid and it exists more mainly as this form. It automeric form uska zyada stable hai. Kyun? Because there is a presence of intermolecular hydrogen bonding, and that's why our correct answer will be 3/2/1. ओके, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देती है और इस वजह से ये मॉलिक्यूल हमारा इस तरह से प्रेजेंट होता है. ओके, एनी डाउट? Yes, any doubt? Any doubt in this chapter? Okay. So we have seen about the aldehydes and ketones. We have talked about the preparation, chemical reactions, and then we have solved some problems. Try to solve more and more problems from this chapter. And Itard reaction, Rosenmund reaction, Gattermann-Koch reaction, okay, aldol condensation, Cannizzaro reaction. These are very, very important. Okay, and we have seen several things in this chapter. Okay, preparation के भी oxidation कब होता है, oxidation होगा तो क्या form होगा, only ketone कब form होगा, only aldehyde कब form होगा. Okay, so that's it for today's session. If you have any doubts, you can ask. ओके, इसका पीडीएफ में ड्राइव पर डाल देती हूँ, आप वहां से चेक कर सकते हो. ओके, ओके तरुण, थैंक यू, थैंक यू. नेक्स्ट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. ओके, चलो, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड प्रिपरेशन. ओके, अच्छे से स्टडी करो, कल मिलेंगे. बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय.